Hey guys, what is up? I hope you're fine. Today we'll talk about structure of animal cell. Yeah. Okay, all right. Let's start. First, cytoplasm. Cytoplasm of the cell. I'm drawing here. You must notice I'm drawing at the periphery, but no, cytoplasm जो है हमारा पूरे cell के अंदर distributed है. So in this way we have two types of cytoplasm, or we can say cytoplasm is made up of two zones. We will say ectoplasm, and next is the endoplasm. So I am drawing ectoplasm. Yes, ectoplasm अगर हम कहेंगे cytoplasm का वो part which is beneath the cell membrane. Okay, then next is the endoplasm. Endoplasm भी हमारा cytoplasm का part है. Endoplasm, that is the inner part of the cytoplasm. We can also say that cytoplasm between ectoplasm and nucleus, it is endoplasm. Now we can draw plasma membrane or cell membrane. This I'm drawing with black pen. This is known as the cell membrane. As it is animal cell will lack cell wall, but it is composed of the cell membrane at its periphery. So cell membrane, we can call it plasma membrane, or we can also call it as plasma lemma. इसके 3-4 नेम्स होते हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. It means it can allow exchange of materials in and out of the cell. And this yellow we have drawn, this is the cytoplasm. तो आपको याद रहेगा, सबसे पहले विल ड्रॉ द साइटोप्लाज्म का एक्टोप्लाज्म पेरिफ्री वाला पार्ट, उसके बाद विल ड्रॉ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बहुत ईजी है. इन 5 minutes यू विल learn to draw the animal cell. I hope so this video helps you, and the simplest structure of animal cell which may help you I am drawing over here. Cytoplasm, plasma membrane. Then we'll come to our important part of the cell. इसके बाद आप याद रखेंगे कि सबसे important part जिसमें हमारा genetic material होता है, that is nucleus. Yes, as the first and foremost thing in the cell, inside the cell we'll draw the nucleus. Okay, nucleus, इसके अंदर हमारी 3 चीज़ें आ जाएंगी: nuclear membrane, nucleolus and nucleus. So we are drawing over here nucleus. So if we open the nucleus, so I'm drawing it like this. See, now you can see that a nucleus is open. Inside it consists of the nucleolus. Yes, nucleolus small round granular structure होता है which is present inside the nucleus, and it contains RNA and some proteins. nucleolus के अंदर जो हमारा कुछ proteins and कुछ RNA present होता है. So this nucleus, it contains the chromatin material, DNA, and nucleolus, and nucleolus contains the RNA and the proteins. So outer nuclear membrane, उसके अंदर, then it is the nucleus, and inside the nucleus we have the nucleolus. Very important structure in the cell. So next structure in the cell, not structure, actually cell organelles. These are the cell organelles. जो भी हम जो सेल के अंदर आफ्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्टोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो एम्बेडेड है हमारे, दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स. Combinedly we can call them the cell organelles because these are present inside the cell. So this I am drawing over here. You can see how I am drawing. This is your Golgi apparatus. Golgi body or Golgi apparatus, it is named after Camillo Golgi. Camillo Golgi वो he was the person जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था inside the cell. तो इसके बहुत से फंक्शंस होते हैं Golgi body के, like processing, packaging and labeling and delivery of proteins and also lipids. Next is our smooth endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum दो तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट आई हैव ड्रॉन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो मेजर डिफरेंस होता है इनके बीच में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट हैज़ राइबोसोम्स on its surface, and whereas a smooth endoplasmic reticulum it lacks ribosomes. तो this is smooth endoplasmic reticulum. न्यूक्लियस बनाएंगे आप, फिर गोल्जी बॉडी बनाएंगे, देन विल मेक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
Now we are done with the smooth. We'll make another the same type of structure that is known as rough endoplasmic reticulum. So major difference जो है इन्हीं के बेसिस पे इनके नाम दिए कि rough endoplasmic जो है rough है because ribosomes are attached on its surface, and smooth endoplasmic reticulum is smooth because of the absence of ribosomes on its surface. These are ribosomes on the surface of rough endoplasmic reticulum. Very easy, बहुत easy diagram, बहुत simple structure, and these structure cell organelles, these are also very easy to make. Main function जो है हमारा rough endoplasmic reticulum का, that is synthesis of proteins, and smooth endoplasmic synthesis of lipids and steroids. Okay, I hope you get it. Now next point is, I'm sorry, I have forget to press the record button, and I have make two structures, ribosomes and mitochondria. Mitochondria very easy to make. एक आपने सॉसेज जैसा होता है उस तरह का ओवल आपने बनाना है, एंड देन फोल्डेड अपीयरेंस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर नोन एज क्रिस्टी. फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हमने ऑन द सरफेस राइबोसोम्स बनाए थे, तो राइबोसोम्स विल आल्सो मेक इनसाइड द सेल. एंड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, and because it produces energy, synthesis of ATP. Next is secretory vesicle. Next cell organelle is secretory vesicle inside the cell. Then after this there is the lysosome. Don't confuse with lysozyme, because lysozyme is the enzyme that is present in our tears. This is lysosomes. Lysosomes are the cell organelles present inside the cell. Next cell organelle we have centrioles. Centrioles I am drawing over here, rounded structures. Centrioles are actually present in the centrosome of the cell. So centrosome and centrioles, you can count them as one, and centrioles within the centrosome, they are responsible for the movement of chromosomes. Yes, they also have a really important function in the cell, movement of chromosomes during cell division. Okay, so small cell organelles like secretory vesicle, lysosomes, centrioles. One more is left, that is peroxisomes. Yes, this black rounded structure I am drawing, the black pen, these are peroxisomes present inside the cell. Peroxisomes have enzymes, oxidative enzymes in them, and they perform the function of breakdown of excess fatty acid, oxygen utilization, and also in the formation of bile acids, etc. So peroxisomes are also very important. Centrioles, secretory vesicle, lysosomes, small rounded structure, cell organelles. After these, we are left with the cytoskeleton of the cell. Yes, cytoskeleton, you have to remember it, that cytoskeleton consists of the two bodies. One is the microtubule, another is the microfilaments. Okay, so I'm drawing here with the brown pen. These are microtubule and microfilament, cytoskeleton of the cell. These are microfilaments, as you can see, and this one here I have drawn, these are microtubules. And the function of cytoskeleton, consisting of microtubule and microfilaments, is to determine the shape of the cell. Also, they help in cellular movements. Yeah, so this was animal cell, the structure, simplest structure of animal cell. Now let us revise for a few moments that how I have learned that few mnemonic, or we can say the learning technique, that how we had learned. First we'll draw this, then this, and then how can we draw the full animal structure without leaving any cell organelle. So let me tell you, first we have drawn nucleus plus nucleolus, then next we have drawn the endoplasmic reticulum. इसमें आपके दोनों आ जाएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपने याद रखना है कि उसकी सरफेस पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स. यस, आवर थर्ड सेल ऑर्गेनल वर राइबोसोम्स. सो न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ribosomes, and we have mitochondria, of course, the powerhouse of the cell. Last, in this category we have the Golgi body, because first these 5 cell organelles we have made. Then next, the microbodies, we have made the secretory vesicles,
Yes, lysosomes, centrioles, and last but the peroxisomes. Okay. Peroxisomes. Okay, see, these five will learn all together. These four will learn as one. And last, what I have told you? Cytoskeleton. I haven't told you microtubule, microfilaments, different cell organisms. That is cytoskeleton consists of microtubule and microfilaments. Yes, microfilaments and microtubule. So you learn it as C2. That is two parts of cytoskeleton. So now, what was the mnemonic that ये 5 ऑर्गेनल आपने एक साथ याद करने हैं, ये 4 ऑर्गेनल्स हो गए हैं, एंड देन यू हैव टू रिमेंबर 2 microtubule and microfilaments as C2. C2 means cytoskeleton 2. That cytoskeleton comprises of microfilament and microtubule. So this was how I have learned the structure of animal cell. That 5 cell organelles, then 4 cell organelles, 4 more microbodies, and then C. So I hope कि ये टेक्निक एनिमल सेल ड्रॉ करने में आपकी काम आए. फर्स्ट आपने मैक्रोबॉडीज़ बनानी है 5, देन 4 माइक्रोबॉडीज़ एंड ऑल्सो साइटोस्केलेटन. आपको ये भी याद हो जाएगा C2 से कि साइटोस्केलेटन के 2 पार्ट होते हैं. ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. एक बार क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए, लेट्स कम टू द डायग्राम एंड क्विकली रिवाइज ऑल द सेल ऑर्गेनल्स एज जैसे हमने टेक्निक बताई है उस हिसाब से कि फर्स्ट 5 विल ड्रॉ, देन 4 एंड देन C2, एंड दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. तो फर्स्ट क्या बताया हमने? न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियोलस. रिमेंबर? ओके गाइज, नाउ क्विकली आई एम गोना लेबल द डायग्राम और क्विकली फटाफट से आप रिवाइज कर लेंगे सारे जो कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स. पहला हमारा क्या था? न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियोलस, विच इज़ डन. नेक्स्ट वाज आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड rough endoplasmic reticulum. Ribosomes attached on the surface of rough endoplasmic reticulum. उसके बाद हमारे सेल और साइटोप्लाज्म में भी पाए जाएंगे what? Ribosomes. So these three we have shown as ribosomes. Okay, next was our what? Nucleus plus nucleolus हो गया है, endoplasmic reticulum हो गया है, ribosomes हो गए हैं. अच्छा जी, then इधर भी these two microbodies ये क्या हैं? Ribosomes ही हैं. Okay, don't confuse with them. So next, yes, mitochondria, powerhouse of the cell. यहाँ पे हमने सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, तो सिंगुलर जो है माइटोकॉन्ड्रियन हो जाएगा और प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया. अगर आप मोर देन 1 माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं तो दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रियन. एंड नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स. एनीथिंग वी कैन राइट. सो दीज 5: nucleus, nucleolus, endoplasmic reticulum, ribosomes, mitochondrion, Golgi body. Okay, then our 4 microbodies we have to draw, which was secretory vesicle. This was, yes, secretory vesicle. Okay, आप जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा, just for the sake of revision कि आपको अच्छे से समझ आ जाए. Yes, lysosomes, then were सेंट्रियोल्स. यस, सेंट्रोजोम प्लस सेंट्रियोल्स. यहाँ पे हमने सेंट्रियोल्स बनाए हैं. दीज जो लाइट ब्लू पेन के हैं, दिस इज सेंट्रियोल्स. एंड लास्ट पर माइक्रोबॉडीज में क्या था हमारा? peroxisomes. यस, क्विकली we have done all the 5 cell organelles, then we have done 4 microbodies, rest cell organelles. Only are what is left? Cytoskeleton of the cell. Yes, cytoskeleton of the cell, microfilament and microtubule. तो ये हमारा microfilaments and last ये हमारी microtubules C2. सो आप उस 5 + 4 + C2 जो आपको फार्मूला दिया है एनिमल सेल के स्ट्रक्चर का, सेल ऑर्गेनल्स का, जस्ट रिवाइज विद दैट फार्मूला दैट आपने 5 सेल ऑर्गेनल्स हो गए हैं, देन सेक्रेटरी वेसिकल, लाइजोसोम्स और सेंट्रियोल्स, पेरोक्सिसोम्स हो गए हैं, एंड देन साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल भी हो गया है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स. एंड इन दिस वे आई थिंक we are complete with the structure of the animal cell.
I hope this will help you in remembering the cell organelles, in remembering the structure, and this help you in your exams. How can we draw the animal cell? Yes. And heading is left, so we can also write it. What is this? Animal cell. Okay guys, I hope you like it. अच्छा जी, ये तो हो गया आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट. तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो लर्न. एक और वे है ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग मेम्ब्रेन. अभी ओके, लेट्स स्टार्ट. अभी बता देते हैं आपको कि लिमिटिंग मेम्ब्रेन का कौन सा तरीका है. सो दिस वे विल हेल्प यू ऑल्सो टू रिमेंबर द सेल ऑर्गेनल्स, एंड कि आप इजीली अपना एनिमल सेल बना पाएँ. लेकिन उसके अलावा भी आपको ये वाला तरीका जो है हेल्पफुल होगा कि आप ये याद कर पाएंगे कि कौन से सेल ऑर्गेनल्स के पास जो है हमारा लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है और कौन से सेल ऑर्गेनल के पास नहीं होता है. सेल ऑर्गेनल्स विच हैव लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल्स विच लैक्स लिमिटिंग मेम्ब्रेन. अब बात आती है लिमिटिंग मेम्ब्रेन है क्या. ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ लिमिटिंग मेम्ब्रेन. सी सेल के जो बाहर है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, which is a semi-permeable membrane, of course. So उसके अलावा एक जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स के पास अपनी अलग मेम्ब्रेन है, इंडिविजुअल their personal membrane besides the plasma membrane. So that membrane which bounds the cell organelles, that is known as the limiting membrane. Yes, जो सेल ऑर्गेनल्स की अपनी इंडिविजुअल एक मेम्ब्रेन है, that is also a semi-permeable membrane. So a membrane which is semi-permeable in nature that bounds cell organelle of the cell, that is a limiting membrane of the cell organelles. So limiting membrane आपको concept समझ में आ गया होगा, I hope. And limiting membrane it is made up of lipids and proteins. So ये concept था हमारा limiting membrane. अब let's see what I have written. See, I have written 8 cell organelles, and then we have written 9, 10, 11 cell organelles as cytoskeleton. 9 and 10 because cytoskeleton, this is C2, microtubule and microfilament, and 11 these are ribosomes. So अभी ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर तो हमारा पूरा हो गया है, बिकॉज 5 + 4 + C2 वो 11 हो रहे हैं, एंड दीज आर ऑल्सो 11 सेल ऑर्गेनल्स. तो व्हाट इज दिस? These 8 cell organelles I have written, these have limiting membrane. As I have already told you, some cell organelles possess their own membrane, that is known as limiting membrane. So endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondrion, centrioles, nucleus, lysosomes, secretory vesicle, and peroxisomes. These 8 cell organelles possesses limiting membrane. Okay, and then these 3 organelles, C2 and ribosomes, these lack limiting membrane. These are without limiting membrane. Cell organelles without limiting membrane: cytoskeleton, microfilaments, microtubules, and ribosomes. These 3 cell organelles does not have the limiting membrane. They only have one membrane, that is the membrane of the cell, that is plasma membrane or plasma lemma. Yes, LM here means limiting membrane. कुछ लोग इसमें confuse हो जाएंगे because so that is limiting membrane. So this was it guys. First technique I have already told you, 5 + 4 + C2 animal cell structure, and second is this. इससे आपने animal cell का structure भी बन जाएगा आपका animal cell. You will learn it completely, but also organelles with or without limiting membrane. So this is it guys. Till then, take care, keep learning, keep growing. Peace.